हम बात करें बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड्स की एक और इंटरेस्टिंग मैच कहेंगे बिकॉज बांग्लादेश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये मैच वो जीतें, 2 पॉइंट्स और हासिल करें और अब वो एक स्टेप क्लोजर है टू द सुपर 8 एंड दैट्स व्हाट दे ऑलवेज वांटेड कि प्लान्ड अप्रोच के साथ जो है वो फेस करें नेदरलैंड्स को बिकॉज रिमेंबर नेदरलैंड्स हर वर्ल्ड कप के अंदर एक प्लान के साथ वो भी आते हैं। दिस टाइम अराउंड थोड़े से रस्टी नज़र आ रहे हैं नेदरलैंड्स की टीम भी, जो उनके की प्लेयर्स हैं स्कॉट एडवर्ड्स इंक्लूडेड, थोड़ी डिफिकल्टी उनको हो रही है। Maybe it's the conditions, maybe it's the World Cup pressure, but a lot more players are around in terms of the teams. You know, we have 20 teams competing, so it's not as straightforward anymore for Netherlands in this World Cup. But Bangladesh will be pleased because not only did they do well with the bat, maybe not as well as they were planning initially, लेकिन फिर भी ऐसा आपने इस तरह कहा हफीज़ के like par total उन्होंने लगा दिया बोर्ड पे, enough for the bowlers to bowl at. But let's talk about Rishad Hussain and that spell. Another great discovery for Bangladesh. We've seen him here and there with the ball. लेकिन रिशाद हुसैन स्टार्ट उनका आइडियल नहीं रहा, 14 रन्स उनको पड़े उनके पहले ओवर में, बट उसके बाद जिस तरह उन्होंने ग्रिप शो की और जिस तरह स्पेशली दैट डबल विकेट ओवर एज वेल, हाउ क्रिटिकल वाज ही इन टुडेज गेम? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मेट में। हमने देखा कि जो भी स्पिनर्स मिडिल ओवर में विकेट टेकर के तौर पर सामने आते हैं, जैम्पा की मिसाल ले लें, रिशाद की मिसाल ले लें, तो वो टीम जीतने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। आई थिंक उनकी मैनेजमेंट, बांग्लादेश की मैनेजमेंट की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से उन्होंने इस पर ट्रस्ट किया, क्योंकि हमें पहले अगर आप बांग्लादेश की क्रिकेट में देखें तो उनकी क्रिकेट के अंदर जो ऑफ स्पिनर थे वो आ रहे थे या एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर वो खड़े थे शाकिब के ऊपर, लेकिन एक वैरायटी ऑफ लेग स्पिनर उनके पास नहीं था जो रिशद की सूरत में आए। ये स्पिन करते हैं, राइट एरिया में हिट करते हैं, और इन कंडीशन के अंदर आपको को बहुत बड़ा स्पिनर होने की ज़रूरत, आइंस्टाइन होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू हिट इन अ राइट एरियाज एंड देन पिच विल डू द रेस्ट। तो अभी मुझे लगता है कि ये उनकी कम्बिनेशन को एक वो कमी जो इनकी जीत में हायल होती थी कि ये विकेट टेकिंग एबिलिटी इनकी लेस हो जाती थी मिडिल ओवर में, वो इन्हेंस हुई है रिशद के आने से। और जब रिशद ने जो परफॉर्म किया, आप देखें कि इनकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, या अंडर पार रोक लिया या जीतने में कामयाबी के अंदर जो है अपना रोल प्ले किया। तो मुझे लगता है कि इसमें इनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट की राइट प्लानिंग, और मैं फिर ये कहूँगा कि मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, ये नहीं कि मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, ही मस्ट हैव डन अ ग्रेट जॉब फॉर द बांग्लादेश टीम। आई एम टॉकिंग अबाउट मुश्ताक अहमद, कि जब से वो इस टीम के साथ गए हैं इनकी स्पिन बॉलिंग की वो जो शार्पनेस है वो वापस आते नज़र आ रही है। And जो induction, you know, the induction of somebody like Rishad Hussain in these conditions, it speaks of the planning that Bangladesh have been doing for this World Cup. And of course, in contrast to, because we almost always link the spinner problem with Pakistan's challenges. It's interesting to note that, of course, Pakistan have been sort of unable to utilize their resources. We're talking about Abrar Ahmed or maybe Usama Mir, not having that plan as far as the conditions go. लेकिन स्पिन बॉलिंग कोच नहीं रखना चाहिए, कोच नहीं रखना। देखिए अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करें तो सिर्फ इसी कंडीशन में नहीं, इससे पहले भी एक मैच खेला उन्होंने जो कि न्यूयॉर्क में था, और अगेंस्ट किसके था जी? साउथ अफ्रीका। वहाँ भी जो सेकंड लास्ट ओवर किया उन्होंने, जाके डेविड मिलर को जिस तरह उन्होंने आउट किया था वहाँ पे, तो वो ऐसा लग रहा था कि 20 रन शायद और हो जाते, लेकिन वो जब वो लाए हैं उनको तो अमेजिंग था, उन्होंने आते ही आउट कर दिया। But their key spinner is not sitting on the bench. He is part of the 11, and I think that's what's making all the difference for Bangladesh. I mean, how crucial is it to have a good spinner in your ranks, as you say? Like when T20 cricket started, remember everyone thought it was going to be the death of the spinner, right? Oh, you know, they're going to get absolutely hammered. Like, what are we going to do with our spinners? And they innovate and they worked really hard, and they become the leading wicket takers in the history of the tournament, right? If you look at the top three, you've got the likes of Rashid Khan and Wanindu Hasaranga up the top. Adam Zampa is there, and now this guy. And we know that wrist spinner always, you know, when they take wickets for you, especially that middle phase, win the games because of their performances. And how lucky to have a talent like Mushtaq Ahmed in your dugout. I get to interview him quite a lot through PSL, and I know what a wonderful coach he is, even with the Multan Sultans. So Bangladesh very lucky to have the incredible spin king in their ranks, giving them all of the advice. And with that, let's relive the wickets that did fall in the Netherlands' turn to chase, because they got through the bulk of them. 134 for 8 is what they could manage. Starting from the beginning, Marty, Taskin, he's been so good with the new ball and strikes once again in his second over.
Yeah, he did. It was really good bowling from him. That's a fantastic caught and bowled. That a little bit unlucky for Max O'Dowd there. Hit it pretty nicely. Pretty key wicket that. Vikramjit Singh was looking to start to get going, and Mamadullah just slowed it up, put it a bit wider, and got the reaped the rewards for it. And this is the period here where things started to go south for the Netherlands. 3 wickets in a space of 8 balls or so. Really good piece of bowling there from the leg spinner. Bringing Bastelator forward, off balance, and then a great piece of wicket keeping from Lytton Dust to whip the bails off so quickly to get that wicket. So just a key period there where Netherlands really will let themselves down and ended up that being their downfall. Yeah, it was a wonderful performance by them, and it really measured, I suppose, performance by them with the bat and with the ball moving forward if they do make it through to the Super 8. How much is this win going to encourage them? Because Bangladesh have had so many opportunities in ICC tournaments. They don't seem to perform well in ICC tournaments, but when you look at their team on paper, Eunice, there's so much talent within the ranks. There's so much experience as well. They've got a blend of youth too, so there's obviously a thought process in mind to not only look towards trying to do their best in competitions, but to look towards the future, which is why finding someone like Hussain is so exciting within their ranks, and obviously, with that young opener as well, doing really well today. A lot of positive signs for Bangladesh. Could this be their year? These are conditions that suit them. And of course, the change in leadership also has really helped them, get into this new direction. We have seen they have had problems, as far as Shakib is concerned. He's a bit of a character. We have seen him, in some scandal or the other, but what an integral match winner he has been for this team. And of course we saw that once again today, that there is no replacement for experience, especially in the T20 format. हम बहुत बात करते हैं youngsters की, लेकिन ऐसे मैचेस में आपको वो आपका experienced match winner ही है जो games close करके देता है. On करते for next 2-3 more hours, they will be easily something post 180. और यही होता है जब जैसे वो बॉलर्स आए बॉलिंग करने आए. लेकिन मैं अच्छी बात ये बताऊंगा कि नजमुल हसन शंटू की जो आज कैप्टनसी थी ना, वो अमेजिंग थी. वो इसलिए कि देखा जब एक लेग स्पिनर आए और जिस वक्त उनके बैटर खेल रहे थे और उनके खिलाफ वो 1-2 छक्के मारे उन्होंने. मैं बात कर रहा हूँ विक्रमजीत सिंह की. उन्होंने आके 1-2 उन्होंने बिग शॉट्स खेली, लेकिन सडनली उन्होंने क्या किया, बहुत स्मार्टली महमूदुल्लाह को 1 ओवर दिया और उसने उसको आउट किया. तो मेरे ख्याल से देखें ये एक अच्छे साइन है. और फिर जिस तरह हम मुस्तफिजुर रहमान की बात करेंगे, फिर तस्किन की बात करेंगे, हमने पहले भी मैच से पहले भी हमने बात की कि वो कितना क्रूशल है. तो मेरे ख्याल से उनकी अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो सब ने चिप इन किया, और ख़ास तौर पर जब लेग स्पिनर्स मेक गेम्स फॉर यू एंड विन्स गेम फॉर यू. तो वो एक जो होता है बीच में, तो जैसे उन्होंने 2 ओवर में, लेकिन उसके बाद जिस तरह वो दोबारा उनको यूटिलाइज हुआ, तो ये एक अच्छी टीम के साइन है. और फील्ड में एनर्जी थी उनके पास. They were there for win. So that is the it was a commendable combined effort from their bowling, like we saw this morning from West Indies, and of course now we saw Bangladesh, and the captain, as Yunus said, he was using his resources just perfectly in this. मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँ, जैसे यूनुस भाई ने बात की कि स्पिनर्स विन यू द गेम्स, आप मेक अ गेम फॉर यू. आप देखें कि बड़ा राइटली बांग्लादेश की मैनेजमेंट के अंदर मुश्ताक अहमद को एज ए लेग स्पिनर, एज ए स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट ऐड किया गया. कहाँ खेल रहे हैं? वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन में, जहाँ पे आपको मोस्ट स्पिनर्स की परफॉर्मेंस चाहिए. अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है या इसके अंदर कहीं पे भी एक सक्सेसफुल रन लेना है, तो यू वांट योर स्पिनर टू परफॉर्म वेल. उन्होंने क्या किया है बांग्लादेश ने, उन्होंने अपने एक रिसोर्सेज के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर मुश्ताक अहमद को एज ए लेग स्पिनर कंसल्टेंट के तौर पर ऐड किया. ग्रेट स्पिनर अपना वो इनपुट देते होंगे और उसका फ़ायदा हो रहा है. ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर मैं सिर्फ इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि एशिया कप के अंदर हमने देखा कि हमारे स्पिन बॉलिंग ने परफॉर्मेंस नहीं दी. वर्ल्ड कप के अंदर आपकी स्पिन बॉलिंग ने परफॉर्मेंस नहीं दी. दोनों कंडीशन कहाँ की थी? श्रीलंका और इंडिया, जहाँ पे स्पिनर का रोल था. अब फिर आप जा रहे हैं कहाँ पे? मोस्ट फ्रेंडली स्पिन बॉलिंग ट्रैक के ऊपर, जो कि वेस्ट इंडीज़ है. वहाँ पे भी आप अपना एक सैयद अजमल को पहले इन्होंने टीम के साथ रखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, लेकिन इस टूर के ऊपर फिर वो नहीं है. तो ये देखें, आप राइट वे में मैनेजमेंट को इंगेज करते हैं कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है. तो बांग्लादेश को मैं समझता हूँ उनकी मैनेजमेंट ने राइट डिसीजन लिया. एक अच्छी इंडक्शन की अपनी मैनेजमेंट के अंदर, एक यूज़फुल बंदा जो क्रिकेट की राइट अंडरस्टैंडिंग स्पिनर को समझा सकता है, उसको इंगेज किया. उनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं. और ऑन द अदर हैंड
आपके सामने। Right. Yep, lots of food for thought there, as always, Professor. Let's just relive a little bit more of this yeah. Bangladesh win, though, because the experience of the likes of Mamadullah, Shakib Al Hassan, the Mustafizur Rahman as well was fantastic. But in fantastic news for Bangladesh cricket moving forward, as well as a certain opener, young 23-year-old in Tanzid Hasan was brilliant up the top of the order. Marty, I'm going to come to you as an opener in white ball. I just want to chat to you about this innings of his of 35 of 26 when he was losing wickets around him as well. They were under a little bit of pressure early on as the ball was doing a bit. What was so impressive about his 35 of 26 for you, and how measured the young man was in amongst all of the chaos? Yeah, he was composed, wasn't he? And he picked the right ball to go and hit them beautifully. I mean, 5 fours and a 6 in his 35, and you know, striking 134 was really well done. You know, picked up on anything that was just a fraction short and a bit straight, lifting up over fine leg, and you know the key thing to that was his head position. He got his head 4 into or the 6. ball. That one It looked pretty close. But it was contentious, wasn't it? But then just used his power and his strength to hit square and pick up on anything that was just slightly short, and he was very quick to go press forward and go back onto his back foot, and you know that's a great shot through mid off there, using his feet, being in the right position to hit the ball, and then helping it on its way there. Fielder possibly could have done maybe a bit better there for the Netherlands, but that's cricket, that's the way things go. But no, I thought he played really, really well. A really important partnership with Shakib to get things back on track of 48 to get them to 71 for 3 in 8.3 overs. It was a really key time, and he'll be disappointed that he got out at the time that he did, because you know that partnership, if that had developed into a 70 or an 80 run partnership, you know they were looking at 180 plus as a score, and that would have been probably way too much for for Netherlands to try and chase down. Nevertheless, a really mature, measured innings from the young Bangladeshi opener, and of course contributed in a big way to inevitably a big win by them. 25 runs over the Netherlands today.